Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Talat Yazdani and I'm going to teach you managerial economics. It's going to be a series of 45 lectures. I have done my master's from Government College, which is now known as GC University Lahore. Almost from the start of my career, I have joined Lahore College for Women, which is now known as Lahore College for Women University. The classes that I have been teaching are MSc, MA, MS and BS honors classes. And my teaching area of interest is mathematical economics, research methodology and computer applications, statistics, WTO, trade and policy issues. For this course of managerial economics, I have selected two core books for your reading material. The first one is written by Dominic Salvatore and the title of the book is Managerial Economics in a Global Economy. जो टाइटल मैं यूज़ कर रही हूँ वो 5th edition है. इससे पहले का एडिशन अगर आपको मिलता है तो वो भी काम जो है चल सकता है. I mean there is more or less they are this similar. The other core book is Managerial Economics by Mark Hershey, 11th edition. इन दोनों बुक्स में से कोई एक आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं. बेहतर होगा कि आप सैल्वाटोर की बुक जो है वो सिलेक्ट करें क्योंकि वो रिलेटिवली ईजी है और रिलेटिवली मार्केट में ईजीली अवेलेबल है. To supplement one of these books, there is another book by the same author, that is Dominic Salvatore, and the title of that book is Theory and Problems of Managerial Economics. This is a short outline series, and from the perspective of the students, this book is quite useful. In addition to these two books, I have also selected some other good managerial economics books, and you can see these books on screen. Today's topic of our lecture is managerial economics, its definition, scope, and nature of managerial economics. First of all, we have to define managerial economics. What is managerial economics? Let's see some of the definitions given by the well-known economists. First of all, Joel Dean Sayce, who is the author of the first managerial economic textbooks, defines managerial economics as the use of economic analysis in the formulation of business policies. Hershey defines managerial economics as an application to economic theory and methods to business and administrative decision making. Salvatore defines managerial economics. It refers to the application of economic theory and the tools of analysis of decision science to examine how an organization can achieve its objectives most effectively. An online encyclopedia defines managerial economics as a branch of economics that applies microeconomic analysis to decision methods of business or other management units. As such, it bridges economic theory and economics in practice. It draws heavily from quantitative techniques such as regression analysis, correlation, and Lagrangian calculus. From all these definitions, we can conclude that managerial economics is an application of economic theory and quantitative methods to solve the optimal solution or to get the optimal solution of managerial decision-making problems. This can be explained with the help of a figure which you can see on screen. At the top of the box, you can see that managerial decision-making problems are listed. These are given and we can list these problems as product selection, pricing and output policies of the firm, and product development and promotion strategy of the firm, and similarly the problem of hiring workers and their training, investment and financing problems. To solve or to get the best solution or optimal solution of all these problems that we have listed, the firm or the manager of the firm or team of the manager, they make use of managerial economics, and with the help of managerial economics they try to find the optimal solution of all these problems. As far as the application or scope of managerial economics is concerned, it's not just restricted to a business firm. इसमें हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जो है देख सकते हैं. For example, government agency, not-for-profit agency like private hospital, universities, इन सब का भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके भी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, इनको भी फेस करने पड़ते हैं, एंड दे आल्सो हैव टू फेस द कंस्ट्रेंट्स. जैसे कि एक हॉस्पिटल है
तो वो वहाँ पे वो ट्राई करेंगे कि स्टैंडर्ड मेडिकल केयर जो है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को मिले, subject to the constraints, and those constraints in this case are financial constraints or other physical constraints. In physical constraints we can include the doctors, nurses, technicians, drugs, number of beds, etc. इसी तरह से अगर हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लें, जैसे कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, a public university seeks to maximize to give its standard education facilities to as many students as possible given its constraints, and in this case the constraints again could be physical constraints or financial constraints. Similarly, एक गवर्नमेंट एजेंसी जो है जो कि पब्लिक यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो उसका भी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम जो कॉस्ट पर ये पब्लिक यूटिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करे. तो इसके लिए भी इन सब ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ दे हैव टू they can use managerial economics to find optimal solutions to these decision making problems. अब इसमें ये है कि problems जो हैं as far as problems are concerned or as far as the objective and the constraint is concerned, objective और constraint जो हैं वो different हो सकते हैं for different organization, but the decision making management process that is the same for all of these organizations. Therefore, we can say that managerial economics has a vast scope and it can be used in any organization other than a business firm. But basically, we will concentrate on a business firm. तो इसमें हम देख सकते हैं कि अभी हमने ये कहा था कि जब हमने इसको डिफाइन किया तो हमने देखा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स. Basically, economic theory has two main categories, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is the study of economic behavior of individual decision-making units, such as individual consumers, resource owners, and business firms. Macroeconomics, on the other hand, is the study of totals or aggregate, that is, aggregate level of output, employment, consumption, investment, and prices viewed as a whole in the economy. Basically, we have said that managerial economics essentially uses the tools of microeconomics. But this does not mean that macroeconomics is completely ignored. Because macroeconomics, basically the firm is operating in an economy and it has to consider the basic macro variables such as aggregate level of demand in the economy, rate of inflation, and interest rate. Then we have said that the managerial economics uses and it applies economic theory and also the quantitative methods. Quantitative methods basically उसमें हम include कर सकते हैं mathematical economics, econometrics, and all other computational methods. We'll be concentrating basically on mathematical economics and econometrics. Mathematical economics formalizes economic models that are postulated by economic theory. And econometrics makes use of statistical techniques and the real world data in order to estimate the economic models which are postulated by the economic theory. We can take an example of the demand function, which is one of the important models of economic theory. यहाँ पे हम ये कहते हैं कि quantity demanded of a product depends on price of the product, income of the consumer, and prices of the related goods. The same statement which we have given verbally, that can be expressed mathematically. As you can see on the screen, that we can write an equation that quantity demanded depends on, or it is a function of price of the commodity X, income of the consumer Y, and prices of the related goods which are given by PR. This is the functional form in which we have expressed the demand equation, the demand function. और इसी तरह से और इसको ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए हम फिर इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ गिवन बाय द डिमांड इक्वेशन. Once the firm has the data on QX, that is the quantity demanded of X, price of X, income of the consumer, prices of the related good, then the firm can use this data to estimate the demand function, and similarly it can also
use the data by using statistical techniques, उसमें फिर फर्म जो है वो इस तरह से इसमें बता सकेगी कि फ्यूचर में डिमांड जो है वो क्या होगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म टू अचीव इट्स goals and objectives subject to the constraints. इसमें जब फर्म जो है इसके पास रियल डेटा जो है क्वांटिटी पे, प्राइस पे, prices of the related goods or income of the consumer, the data is collected by the firm and then it is utilized by using statistical techniques. इसको फिर empirically estimate किया जाता है डिमांड फंक्शन को, और इसी तरह से the firm will be able to forecast or to give the future demand as price of the commodity changes or income of the consumer changes, or if there is a change in the prices of the related goods. The theory of the firm is the central piece of managerial economics. A firm is an organization that combines and organizes resources for the purpose of producing goods and or services for sale. फर्म जो है उसका जो बेसिक फंक्शन है कि वो परचेज करती है रिसोर्सेज फ्रॉम इनपुट्स, दैट इज़ जो इनपुट्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जैसे कि कैपिटल है, लेबर हायर करते हैं, और इसी तरह से जो ये सारी इनपुट्स है दैट इनपुट्स इज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू goods or services and they are presented for sale. There are millions of firms in the world and they are basically, they are number one, proprietorship. That is, in that case, the owner is an individual. That is, there is only one individual who is the owner. Partnership, there are two or more owners, or corporations where the owners are stockholders. अब ये सारे different types की जो firms हैं, मेजॉरिटी जो हम कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं गुड्स और सर्विसेज, 75% ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज बिजनेस फर्म्स एंड द रिमाइंडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्म जो है उसके फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ द फर्म इज़ टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू goods and services and present them for sale into the market. इसके अलावा फर्म्स जो हैं उनके और बहुत सारे हम देख सकते हैं कि सोशल एडवांटेजेस हैं, इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं, और इसमें ये है कि फर्म हायर करती है लेबर को और इसी तरह से कैपिटल और दूसरे जो रॉ मटेरियल्स ख़रीदती है. इन सब को जब फर्म ख़रीदती है तो इसके नतीजे में जो भी सर्विसेज या गुड्स वो हायर करती है तो वो जो इनपुट्स या रिसोर्स ओनर्स हैं वो भी जनरेट करते हैं इनकम, और इसी इनकम से फिर वो वापस जाकर मार्केट में अशिया जो है वो और खिदमात ख़रीदते हैं. दैट इज़ दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट, एंड इन दिस वे दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ completed. By supplying goods and services to the consumers, the firm generates employment in the economy. एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फर्म जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वर्कर्स के लिए फराहम करती है. एंड द सेकेंड वन इज़ दैट इट पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट फ्रॉम दोज टैक्सेस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज सच एज नेशनल डिफेंस, एजुकेशन, and it builds infrastructure, and also law and order situation is controlled by the government. The model of the business is called the theory of the firm. In its simplest version, the firm is thought to have profit maximization as its primary goal. The firm's owner-manager is assumed to be working to maximize the firm's short-term profits. Today, the emphasis is on profits, and it has been broadened to include uncertainty and the time value of money. In this more complete model, the primary goal of the firm is long-term expected value maximization, which is given by this equation. Here you can see on the screen that value of the firm is given as the present value of all expected future profits. PV stands for present value, and on the right hand side you can see that there are different expressions as pi 1 by 1 plus r raised to the power 1 plus pi 2 by 1 plus r raised to the power 2, and so on up to pi n divided by 1 plus r raised to the power n. This equation can be expressed in a more compact form as sigma pi t by 1 plus r raised to the power t, where t
goes from 1 to n. So that value of the firm can be expressed as sigma pi t by 1 plus r raised to the power t, where t goes from 1 to n. The same can be written as sigma total revenue minus total cost by 1 plus r raised to the power t, where t goes from 1 to n, because we know that pi is, or profit is, equal to total revenue minus total cost. Therefore, we can express it in this formula. Value of the firm in this formula, we have here pi 1, pi 2, pi n, which represents expected profit in each year, that is t, and r is the appropriate interest or discount rate. The final form of equation is simply a shorthand expression in which sigma stands for sum up or add together. There are different departments of a firm, such as marketing department, finance department, production department, and all these departments, as far as this equation is concerned, where total revenue is given, the major responsibility of the marketing department is the revenue side. And on the other hand, the major responsibility of cost, that is the total cost which is given in the numerator of this equation, is the responsibility of production department. And similarly, the R which appears as the denominator, that is the discount rate, that is the major responsibility of the finance department. तो इस तरह से हमने देखा कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइजेशन और जो theory of firm है, और या जो ये इकोनॉमिक मॉडल जो हमने डिस्कस किया है, basically this is considered to be the objective of the firm to maximize its profit subject to some constraints. Now, as far as the constraints are concerned, we know that there could be many types of constraints. Basically, it is the resource constraint, or it could be a quality constraint, या फिर firm के ऊपर legal constraints भी आ सकते हैं in the form of minimum wage requirements. जैसे कि पाकिस्तान में these days it is 6,000 rupees per month. Minimum wage जो है that is 6,000 rupees per month. इसी तरह से और भी बहुत सारे legal constraints हैं, जैसे कि pollution, the standard of pollution emission, and similarly we can consider many other constraints. In real world, the firm has to optimize the objective or goals subject to these constraints, and it's not just restricted or it is not just for a firm. इसी तरह से जो मैंने पहले भी आपसे कहा, there are other organizations, और उनको भी जो अपने objectives और goals जो हैं वो achieve करने हैं, they are subject to physical and financial constraints. So constraint in this case, as we can see, is very important. In our next lectures, we will be considering constraint optimization. That is, the firm has to optimize its objective. It could be optimization of profit or optimization of revenue. So इसके लिए this has to be achieved subject to a constraint, and this constraint could be, as we have said, resource constraint, quality constraint, or any other form of legal constraint. Some critics have questioned the value maximization criterion, which is used as a foundation for studying the firm behavior. They think that it is too narrow, and it is too narrow and unrealistic. For this purpose, different economists, they have purposed theories which are broader than this theory, and these theories include sales maximization, management utility maximization, and satisfying behavior. यहाँ पे हम सिर्फ उनके हमने जो है we have just mentioned their names because we are going to consider them or discuss them in detail in one of our future lectures at a later stage. But none of these, when we go through these theories, we will see that none of these theories can replace the value maximization theory. So our central theme, as far as this course of managerial economics is concerned, it will remain the value maximization theory that we have discussed just now. तो इसलिए हम जो हमारा जो focus होगा वो profit maximization, जो firm का जो main objective है, that is profit maximization, हम उसी पे ज़्यादा जो है concentrate करेंगे इन lectures के दौरान जो हम managerial economics के ऊपर देंगे. We have seen that in theory of firm, it is the central theme is profit.
we'd like to see what's the difference between an economic profit and a business profit. A business profit is the difference between revenue and explicit cost. That is, we subtract explicit cost from the revenue and we get business profit. Explicit cost is the out-of-pocket expenditure of the firm, and this includes wages to the workers, rent on buildings and factories, and also the interest rate on borrowing capital. ये सारी जो costs हैं ये explicit costs हैं और ये इसमें include होती हैं. When we subtract these explicit costs from revenue, we get business profit. On the other hand, economic profit is revenue minus explicit cost and implicit cost. Now, what is this implicit cost? Implicit cost is the value of the inputs that are owned and used by the firms on its production processes. फर्म के पास जो इनपुट्स हैं जो कि फर्म की अपने जो है मिल्कियत हैं और वो उनको ओन भी कर रही है और उनको यूटिलाइज भी कर रही है, तो उनकी जो वैल्यू है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट. That, as the name indicates, it is the hidden cost. So economists include this cost, which can be explained as the theory of the salary of the manager, which the manager can earn as by working for some other firm, that is working in the same capacity for some other firm. अगर एक manager है जो कि अपनी firm को manage कर रहा है, तो उसकी जो salary है जो कि वो नहीं ले रहा, that is the firm as such does not have to incur costs on these inputs which are owned by the firm. जो firm के जिनको own कर रही है और वो उनको खुद use कर रही है, ये सारे inputs जो हैं इनकी जो है जैसे कि expected salary है manager की, अगर वो किसी और firm में काम करे या अगर firm जो है वो अपनी capital जो requirement है वो खुद पूरी कर रही है, अगर वो यही कैपिटल जो है इसको इन्वेस्ट करे तो इसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और इसी तरह से जो दूसरी फर्म की इनपुट्स हैं जो उसके अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रही हैं, इसका जो कॉस्ट जो इस पर आती है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट में जो है वो इंक्लूड करते हैं. दैट इज़ वाई द इकोनॉमिक प्रॉफिट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस प्रॉफिट, बिकॉज बिजनेस प्रॉफिट इज़ रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, whereas economic profit is business minus explicit cost plus implicit cost. So that we can say that economic profit is equal to business profit minus implicit cost. Implicit cost, which is the value of the inputs that are owned and used by the firm on its own production processes. There are different profits, that is different firms earn different rate of profits. Why these profits vary? For this purpose, we have to consider different theories of profits, which are risk-bearing theory of profit, frictional theory of profit, monopoly theory of profit, innovation theory of profit, and managerial efficiency theory of profit. Now let's explain these theories one by one. The first one is risk-bearing theory of profit. According to this theory, above normal profits are required by the firm to enter and remain in such fields as petroleum exploration with above average risk. So you can see that the greater the risk, the greater will be the return. तो इस वजह से एक जो रीज़न हो सकती है इस थ्योरी में जो बताई गई है, द रीज़न इज़ कि जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा उतने ज़्यादा उसके जो रिटर्न्स हैं वो फर्म को मिलेंगे. द सेकेंड थ्योरी इज़ frictional theory of profit. One explanation of economic profit or losses is the frictional profit theory. And this theory states that markets are sometimes in disequilibrium because of unanticipated changes in demand or cost conditions. Unanticipated shocks produce positive or negative economic profit for some firms. That is, the cost conditions and demand conditions change due to some unanticipated shock. जो इस तरह के unanticipated shock है उससे कई दफ़ा ऐसे होता है कि इस तरह की conditions हो जाती हैं कि डिमांड जो है वो एकदम से increase कर जाती है या cost किसी वजह से reduce हो जाती है और जिसके नतीजे में फर्म जो है वो above normal profits earn कर सकती है. Next is the monopoly
theory of profit, as the name indicates that here the firm earns monopoly profits. This theory asserts that some firms are sheltered from competition by high barriers to entry, economies of scale, high capital requirements, patents enables some firms to build monopoly position that allows above normal profits for extended periods. As we can see that in this case, the firm is able to earn monopoly profit due to barriers to entry into the industry. इसमें जो बैरियर्स हैं, इसमें इंडस्ट्री पे जो दूसरी फर्म्स आसानी से एंटर नहीं हो सकती, उसकी एक वजह ये होती है कि फर्म जो है, एक रीज़न इसकी ये है कि वो मोनोपोली प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती हैं. The second reason is that it's possible that firm has a control over one or more raw materials. If the firm has complete or entire control over one of the raw materials, then it can earn monopoly profits. Next is the innovation theory of profit. This is an additional theory of economic profits, innovation profit theory. It describes the above normal profit that arise following successful invention or modernization. For example, innovation profit theory suggests that Microsoft Corporation has earned superior rates of return because it successfully developed, introduced, and marketed the graphic user interface that is known as GUI, a superior image-based rather than command-based approach to computer software instructions. Microsoft is still enjoying above normal profits. The reason is कि अभी तक हम देख सकते हैं that no other software developing country has been able to compete this. तो इसकी वजह से अभी तक हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अभी तक इनोवेशन थ्योरी प्रॉफिट के लिहाज से उसने जो इनोवेटिव प्रोसीजर इसमें अडॉप्ट किए हैं उसकी वजह से इसको अबव नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं. The next one is managerial efficiency theory of profit. This theory says that if the average firm tends to earn only a normal return on its investment in the long run, firms that are more efficient than the average would earn above normal returns and economic profits. This means that here the firms which are more efficient, they are earning above normal profit. That is, it is a reward of efficiency to the firms. So according to this theory, which is called managerial efficiency theory of profit, the firms which are earning above normal profit, the reason is their efficiency. Here we have seen that profit is very important because this can be used as a signal. Which products are liked by the consumer, कौन सी ऐसी products हैं, services हैं जिनको consumer जो हैं वो ज़्यादा preference दे रहे हैं. And the profits are here, they are working, they are considered to be as a signal for the firm. इसमें ये signal जो है firms को मिल सकता है जब जहाँ पे profits जो हैं वो higher हैं, तो वो firms जो हैं they can expand their output and also new firms can enter the market. And similarly, if on the other hand profits are low or they are negative, in that case what happens that many firms has to exit the market. This is a signal for those firms which are enjoying very low profits. तो उनके लिए ये signal है, profit जो है वो इसको signal के तौर पे ले सकते हैं और वो exit कर सकते हैं market में से या अपनी जो product है उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर सकते हैं. लेवल ऑफ आउटपुट जो है उसको कम कर देंगे इसके नतीजे में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है दैट इज़ वर्किंग एज अ सिग्नल टू द फर्म्स कि जो है मार्केट में कौन सी चीज़, कौन सी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कंज्यूमर्स प्रेफरेंस दे रहे हैं. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सिग्नल फॉर द फर्म्स. Next, we have to consider the international framework of for the managerial economics or the changing environment of managerial economics. In today's world, we are, as consumers, we are using imported goods, such as we are using, using Japanese Toyotas, Italian shoes, bags, French perfumes, Brazilian coffee, और इसी तरह से जो हम दूसरी कंट्रीज़ हैं, they are using Pakistani leather products or textile products,
So it has become, there is an international scenario. The globalization of economic activity, we have to consider it, because without that हम ये नहीं कह सकते, इसके वैक्यूम में हम बात नहीं कर सकते. That is, without considering the internationalization of trading system, we cannot consider the managerial economics, the study of managerial economics, because उसमें ये होगा कि अगर हम इसको इंटरनेशनल साइड को या ट्रेडिंग सिस्टम को कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे तो वो उसमें एक वैक्यूम आ जाएगा, क्योंकि एंड दिस विल बिकम हाईली अनरियलिस्टिक. बिकॉज हम जैसे देख सकते हैं कि आज ना सिर्फ ये कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, बल्कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो कैपिटल दूसरे कंट्रीज से ले रहे हैं. टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल जो हम अमेरिकन या जो भी फर्म्स हमारे यहाँ आके जो इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है, और इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के वजह से वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करते हैं. Similarly, in different developing countries, as we all know, that labor is cheaper as compared to the developed world. For instance, India, Pakistan, बांग्लादेश, यहाँ पे लेबर जो है वो काफ़ी चीप है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यहाँ से लेबर को लेके जाते हैं. दैट इज़ उसमें फिर स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, वो इस लेबर को, क्योंकि यहाँ पे या वो अपनी फैक्ट्रीज़ जो हैं जिसको ऑफशोर प्रोडक्शन कहते हैं, वो यहाँ पे अपनी आके फैक्ट्रीज़ और फर्म्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं, और यहाँ की लेबर जो है जो कि रिलेटिवली काफ़ी चीप है उसको एम्प्लॉय करते हैं. इसी तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जो WTO है या GATT 1947 था, उसमें हमने देखा कि एज अ रिजल्ट ऑफ यूरुग्वे राउंड इन 1995 वी हैव सीन दैट more than 150 countries they are signatories of WTO, and in WTO there are a large number of agreements which was reached, and some of the many very important agreements are agreement on agriculture, agreement on textile and clothing, similarly TRIPS, that is trade related aspects of intellectual property rights, and TRIMS. तो इस तरह के जो सारे agreements हैं उनके ऊपर उन पर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं विच एंड देयर नंबर इज़ मोर देन 150, सब मेंबर कंट्रीज़ ने उन पे साइन किए. दे आर द सिग्नेटरीज ऑफ दीज एग्रीमेंट्स. इन दैट केस इट इज़ डिज़ायरेबल दैट फर्म्स आर फेमिलियर विद द रूल्स ऑफ WTO. इससे पहले जब GATT 1947 में बना तो इसमें भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे, मेंबर कंट्रीज़ बहुत कम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रेजुअली मेंबर कंट्रीज ज़्यादा होते गए. सो द ट्रेडिंग सिस्टम जो है इसमें जो रूल्स हैं, all the countries they have to follow these rules, and obviously the firms who are producing goods and services they must be familiar with these rules, क्योंकि ये रूल्स जो हैं इनको सेटिस्फाई करना जो है लाजमी है, क्योंकि हमने इनके ऊपर साइन किए हुए हैं इन एग्रीमेंट्स पर. और ये एग्रीमेंट्स जो 1995 में हुए थे एज अ रिजल्ट ऑफ 7 years long Uruguay round, all these agreements are very important, and as a result हम देख सकते हैं कि डिफरेंट जो चेंबर्स हैं, जैसे लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स है, और इसी तरह से और जो चेंबर्स हैं पाकिस्तान में, या और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दे ऑल हैव WTO cells in order to familiarize the firms with the rules of WTO. और उसकी रीज़न जो है बेसिकली वो यही है कि फर्म्स को इन रूल्स का के बारे में सही तरीके से पता हो, वो इसको जानते हों और वो उसको सेटिस्फाई भी करते हों. तो बेसिकली फर्म्स जो हैं, जो पाकिस्तानी फर्म्स हैं या इंटरनेशनल फर्म्स हैं, उन सब को इन रूल्स को देखते हुए चलना होता है. बेसिकली द सिग्नेटरीज आर गवर्नमेंट सिग्नेटरीज हैं, लेकिन जो रूल्स हैं जैसे कि ट्रिप्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, या फिर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का जो यहाँ पे एग्रीमेंट था जिसमें फेजिंग आउट थी ओवर द 10 years पीरियड ऑफ 10 years, तो इसके लिए जो रूल्स हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, और ये कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं और इनकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसी वजह से
Lahore Chamber of Commerce and all the other Chamber of Commerce and similar institutions, उन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स इस पे किए सो दैट फर्म्स जो हैं वो फेमिलियर हो जाएं इन रूल्स के साथ और उनको फॉलो करें, बिकॉज दे हैव टू इन द ट्रेडिंग सिस्टम जो इम्पोर्ट्स हैं या एक्सपोर्ट्स हैं उसमें फिर सब फर्म्स जो हैं उनको फेमिलियराइज करना था इन रूल्स के लिए. तो इस वजह से हम जो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, this globalization of economic activity, it requires that the firms should be familiar with the rules of WTO, agreements on agriculture, agreement on textile and clothing, and TRIPS, TRIMS, and there are many other agreements. We are signatories of those agreements. तो इसलिए ये जो aspect है internationalization of the economic activity, this cannot be ignored in the study of managerial economics. Let's have a review of today's lecture. First of all, we have defined what is managerial economics, and we have seen that it is an application of economic theory, quantitative methods to find the optimal solutions of decision management problems. Economic theory, हमने देखा कि basically it is divided into, or it has two main branches, that is microeconomics, macroeconomics. Basically, managerial economics में we are going to apply the tools of microeconomics. As we can see that we are going to concentrate on marginal analysis, demand estimation, forecasting, production and cost analysis, and then we have to consider different market structure under which the firm is operating. तो ये सारे जो tools हैं हम सबको मालूम है कि ये जो हैं ये microeconomics के हैं, और लेकिन इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और हमने ये भी देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, दैट इज़ द कंज्यूमर्स एंड द बिजनेस फर्म्स. तो इसमें जो यूनिट्स हैं बेसिकली वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि नाम से पता चलता है, दैट इज़ अ माइक्रो यूनिट. ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, that is the aggregate level of income, employment, consumption, investment and prices in the economy. हमने ये कहा है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कोर्स हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं उसमें, और जो हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे उसमें हम बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे, लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स को या मैक्रो वेरिएबल्स को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कि फर्म जो है दैट फर्म इज़ ऑपरेटिंग विद इन एन इकोनॉमी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम. तो उसमें जो मेन आपकी बेसिक जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं जैसे कि एग्रीगेट डिमांड है, इन्फ्लेशन रेट है या इंटरेस्ट रेट है, तो फर्म के लिए इन सब बातों के लिए इन सब मैक्रो वेरिएबल के बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है. इस सिलसिले में जो बेसिकली हमने ये कहा है कि हम वी आर गोइंग टू अप्लाई द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, but those tools are explained with the help of quantitative methods, and in those quantitative methods we have seen that we are going to use mathematical economics, econometrics, और इसमें जो different tools हैं जिसको हम decision sciences, tools of decision sciences कहते हैं, these tools in mathematical economics, as the name indicates, it is an application of maths in economics. So it is not as such a distinct branch of economics, it's only an application of mathematics in any branch of economics. It could be microeconomics, macroeconomics, international trade or monetary economics. लेकिन यहाँ पे हम managerial economics में mathematical economics जो है वो use करेंगे, that is we are going to apply maths in managerial economics so that we formalize a given economic model in the form of a function or an equation इंस्टेड ऑफ वर्बल इकोनॉमिक्स. हम जो भी बात वर्बली कह रहे होते हैं या लिटरेरी इकोनॉमिक्स में कह रहे होते हैं, यहाँ पे हमें उसको क्वांटिटेटिवली जो है एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है. सिमिलरली जो दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टेक्निक हमने जो है यूज़ करना है, दैट इज़ इकोनोमेट्रिक्स. और इकोनोमेट्रिक्स में वी हैव सीन दैट बेसिकली इन इकोनोमेट्रिक्स वी आर गोइंग टू यूज़ स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स प्लस द रियल वर्ल्ड डेटा. अब रियल वर्ल्ड डेटा जो है डिफरेंट जो भी हमने अगर कोई डिमांड फंक्शन है उसको अगर हमने उसके लिए रियल वर्ल्ड डेटा जो है कलेक्ट किया है,
for a particular commodity, then we can easily estimate the demand function, and also we can forecast the demand for some future period. So empirical estimation या econometric जो estimation है वो हम techniques जो हैं वो यहाँ पे use करेंगे. इसके अलावा हम optimization techniques भी use करेंगे, and for optimization techniques we are going to use differential calculus, programming, that is linear programming, and in addition to these quantitative methods we are also going to use game theory. So managerial economics can best be explained as theory expressed in the form of mathematics, या वहाँ पे और जो numerical या computational methods हैं वो हम use करेंगे. तो यहाँ पे हमने देखा कि that we are going to use a combination of theory and quantitative methods. And the purpose of using managerial economics is to help manager or team of manager of a firm to reach its objective, where subject to some constraints. And the objectives basically we have seen that it is the value maximization model of the firm that we have discussed. और उसमें हमने यही देखा है कि firm जो है that is going to that is seeking optimization of its present value and the wealth or value, और इसको हमने broaden किया था including the risk factor and also the time value of money, and then we have explained this with the help of a formula. We have also seen the difference between the profit, because profit is basically the central theme of the theory of firm, और उसमें हमने ये भी देखा कि firms के functions क्या हैं और जो firm है उसके function, उसके social function जो हैं society में क्या है, उसमें society में उसके क्या advantages हैं, और हमने देखा कि basically the firm generates employment for the workers and also it pays taxes to the government, and those taxes are used by the government for different services which the government has to provide in an economy. इसके बाद हमने जो है बात की है प्रॉफिट पे, जिसमें कि हमने, क्योंकि प्रॉफिट बेसिकली जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म दैट वी आर गोइंग टू यूज़, क्योंकि ये हमारे जो है सेंट्रल थीम रहेगी, जिसमें कि हमने ये देखा कि प्रॉफिट इस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल के ऊपर criticism भी हुई है, and some of the economists they have criticized this value maximization model by suggesting that it is too narrow and it is other things must be included in it, such as maximization of revenue or maximization of utility. तो इसमें जो alternative theories आई हैं, कोई भी theory, लेकिन हमने देखा कि वो जो है इसको compete नहीं कर सकी, तो इसलिए हमारा जो फोकस होगा इस कोर्स में वो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी पे होगा, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म बेसिकली इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, when we talk about profit maximization, we have seen that there are basically two types of profits. One is the business profit and the other is economic profit, and we have seen that business profit is revenue minus explicit costs, while the economic profit is revenue minus explicit cost plus the implicit cost. The explicit cost, as the name indicates, they are out of the pocket expenditures of the firm, while implicit cost is the value of the inputs owned and used by the firm on its own production processes, and we have given many examples to explain the implicit cost. So economic profit is equal to revenue minus explicit cost plus implicit cost. This means that we can also express it as economic profit equal to business profit minus implicit costs. We've also discussed that why different firms earn different level of profits, that is above normal profits, and below normal profits. For this purpose, we have explained different theories on profits, and these theories were risk-bearing theories of profit, frictional theory of profit, monopoly theory of profit, innovation theory of profit, and managerial efficiency theory of profit. We have seen in these theories that there are different reasons for different level of profits which the firm in an industry or economy are earning, and why their profit varies. In addition to these profit theories, we have seen the role of profit, that is the function of profit. The profit, as we can see that it plays the role of a signal for the firm's
that which commodity is being preferred by the consumers. इसमें firms जो हैं अगर उनके above normal profits हैं तो उनको signal मिलता है कि वो अपनी आउटपुट को एक्सपैंड कर सकते हैं, या इसमें इंडस्ट्री में नई फर्म्स जो हैं वो एंटर हो सकती हैं. न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड ऑब्वियसली टू अर्न प्रॉफिट्स. और इसी तरह से अगर बिलो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं या जो लॉसेस इनकर हो रहे हैं तो उस सूरत में क्या है कि फर्म्स जो हैं वो डिसाइड कर सकती हैं कि वो अपनी प्रोडक्शन या आउटपुट लेवल को कम करें. And similarly, some of the firms will exit the market, which are incurring huge losses. So, profit जो है वो यहाँ पे एक signal के तौर पर काम जो है करेगा. This is the main function of the profit in this sense. Here, the firms use profit as a signal for the expansion of their output or the contraction of their output, or maybe they can use it for entering the market or exiting the industry. Next, we have considered the role of business in society. Why firm exists? Basically, the business firm exists because they help satisfy consumer wants, and these firms contribute to social welfare. And there are certain social responsibilities of the business firms, and those are, number one, they serve the customer. Number two, they generate employment for the workers, and number three, they pay taxes to the government. और जो गवर्नमेंट को ये टैक्सेस पे करती हैं फर्म्स, तो इससे गवर्नमेंट जो है वो फिर अपने हमारे लिए इससे सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि आम फर्म्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं. एंड दीज सर्विसेज इंक्लूड नेशनल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एंड ऑल्सो एजुकेशन. और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट इन टैक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और रेलवे लाइंस ये सब भी बना सकती है. नेक्स्ट वी हैव कंसिडर्ड द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. और इसमें हमने देखा था कि एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हम दूसरे कंट्रीज़ की जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, स्किल, लेबर, ये सब यूज़ कर रहे हैं. एज कंज्यूमर्स हमने देखा कि हम डिफरेंट कंट्रीज से जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं. इसका ये नहीं है कि पहले हम नहीं यूज़ करते थे, पहले भी हम करते थे, लेकिन अब उनकी जो क्वांटिटी है एज सच वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम अमेरिकन मार्केट को देखें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि तकरीबन हर कंट्री से जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वहाँ पे मौजूद हैं. इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, they are using labor from the developing countries, because labor in developing countries such as Pakistan, India, Bangladesh, there the labor is cheaper as compared to the developed world. तो इस तरह से ये जो international aspect है इसको हम ignore नहीं कर सकते. इसमें ये जो globalization of economic activity है जिसमें कि goods and services, capital, technology और skill और unskilled labor जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. तो इसको भी जो है इसमें इस पर्सपेक्टिव में वी आर गोइंग टू स्टडी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स in this perspective of globalization of economic activity. In the subsequent two lectures, we are going to discuss optimization, that is optimization techniques, and also the constraint optimization. Optimization techniques, in optimization techniques, we are going to discuss maximization or minimization of a function. That is, we have to maximize a function or minimize a function. Obviously, if you are considering the revenue function or profit function, then the firm is going to maximize these functions. On the other hand, if we are referring to a cost function, then that function is to be minimized. As far as constraint optimization is concerned, I've already said in today's lecture that constraint optimization is a very important topic of the managerial economics, in which the firm maximizes or minimizes or optimizes a function subject to some constraint. And we have discussed here that there could be many types of constraints. Basically, there are many types of constraints. It could be quality constraints, resource constraints, budget constraints, and similarly,
इसके अलावा जो है हम और बहुत सारे टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स देख सकते हैं, जैसे कि लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं, एंड एन अदर फॉर्म ऑफ द कंस्ट्रेंट्स कुड बी in the form of unavailability or non-availability of the raw materials or non-availability of skilled labor. ये भी हो सकता है कि कोई एक रॉ मटेरियल जो है जो वो फर्म को उस क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है जिसमें उसको जो है उसकी ज़रूरत है. सो दिस इज़ अनदर form of a constraints. All these we have to optimize a function subject to one or more constraints. Basically, we will be considering here at this stage, we will optimize a function subject to only one constraint, but there could be more than one constraints. तो इसमें जो है इसको solve करने के लिए हम different methods use करेंगे. One of those methods is substitution method and the other is Lagrangian function method, which is more powerful as compared to substitution method. So we are going to optimize these functions subject to some constraint. And this is our central theme of our next two lectures, that is economic optimization and then constraint optimization. With that, we come to an end of today's lecture. Thank you. Khuda Hafiz.